Hi, so we have done section 1 of sample question paper, which is for class 10 session of 23-24, right? Now we'll do the larger sections, which is B, C, D and E, okay, which are like lengthy questions of 2 marks, 3 marks, 4 marks. So be ready, it's going to be a very long video. And we have this, let me change the color, okay. We have this question here, which is very standard typical question of prove that root 2 is a irrational number. Now you will find this question in a textbook, you will find it everywhere. Okay, so I have just pasted the standard response. Now what it says is, let's presume that the root 2 is not a rational number. Okay, and that means it is an irrational number. Okay, so that means we can find two integers a and b such that root 2 is equal to a, right? So question was root 2 is an irrational number. We are presuming the opposite, that root 2 is rational number. If root 2 is a rational number, we can represent it in the form of p by q, where q is not equal to 0. That is the definition of a rational number, right? So we have assumed that there are two integers a and b such that root 2 is equal to a over b, where A and B both are co-prime. That means there is nothing common between them. They will not adjust against each other. So if you write 3 by 6, that is still they're not co-prime. So 1 and 2 would be the co-prime numbers for this. So that is what they mean by this. So that means b root 2 is equal to a. Now if you square both sides, what do you get? You get 2b square is equal to a square, correct? Now that means 2 divides a square and 2 also. So that means 2 divides a also, because there can't be a square number which cannot be divided by the same number, right? So if 2b square is equal to a square, that means even a is divisible by 2. That means we can write a is equal to 2c when c is another integer. So what it becomes? That means 2b square is equal to 4c square, because a is equal to 2c. Now we are back to the same thing. That means b square is divisible by 2. That means b is divisible by 2. If b is divisible by 2, we will write b as 2d. Then that becomes 4d square is equal to whatever. So the series goes on. We don't arrive at a number which is not further cannot be replaced by 2 into the same number. So that means our assumption was wrong, and 2 is an irrational number. This is a very standard kind of question. You will find the same question in the textbook also. So I'll leave it there, and I'll share this screen in the comments box, or you could write to me, and then I can send this screenshot to you. Or if you want, you can take a screenshot of this. Now we'll move on to question number 22. ABCD is a parallelogram. So here we have ABCD. Point P divides AB in the ratio of 2:3. So if point P divides AB in the ratio of 2:3, that means this is 2 by 5 and this is 3 by 5. Correct? And point Q divides DC in the ratio of 4:1. That means this is 4 by 5 and this is 1 by 5. Is that correct? And that is what I have put here. So I'll explain this. So AP is equal to 2 by 5A and BP is equal to 3 by 5A. और DQ जो है 4 by 5A है और CQ जो है 1 by 5A है. तब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है. That means triangle APO और CQO. These two triangles are similar. Reason being, ये आपका अगर एक एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. Parallel lines property. Okay, if this angle is alpha, then ये वाला angle भी alpha होगा. And third angle anyway, vertically opposite angle है. तो ये similarity हो गई. ये similarity हो गई means AP over CQ. AP के सामने क्या आता है? CQ is equal to PQ by OQ is equal to AO by OC. तो आप ये लगा दीजिए, तो आपको AO by OC मिल जाएगा. तो AO by OC क्या हो गया? AO by OC हो गया AO
AO by OC is equal to AP by QC, करेक्ट हुआ ना, AP by QC जो आपने सबसे पहले निकाल लिया था, AP was 2/5, QC is 1/5. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया तो 2:1 का रेशियो हो गया. So we have proved that OC is half of OA, right? I will move on. Okay, how do I get rid of this? Okay, so these images are not locked. Just give me a moment, let me figure it out. Okay, now I'll go ahead. Okay, now we'll move on to next question, which says that I'll enlarge this. Okay, which says that okay, from you are seeing how bad my handwriting is. तो मैं पूरा लिखता तो फिर आपको फिर समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पर पेश किया है, टाइप्ड वन. ओके, अब देखिए फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ को समझना. तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत कुछ कर लोगे. तो ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दिया है. सो एक्सटर्नल पॉइंट पी से हमने एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पीए एंड पीबी आर ड्रॉन. आपको पता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल पर दो टेंजेंट डालते हैं तो वो बराबर होते हैं. सो पीए विल बी इक्वल टू पीबी, राइट. एंड सी पॉइंट से अगर आप देखें तो दो टेंजेंट आ रही है सी ए एंड सी ई, दैट मीन सी ए इज इक्वल टू सी ई, करेक्ट. और डी पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है डी बी इज इक्वल टू डी ई. सो डी बी इज इक्वल टू डी ई. तो ये तीन टेंजेंट्स हैं, पेयर्स हैं उनके, और जो बराबर होंगे. पेरीमीटर ऑफ पीसीडी क्या हो गया, पेरीमीटर पीसीडी क्या हो गया, पीसी प्लस सीडी प्लस डीपी, करेक्ट. दिस एंड दिस एंड दिस. तो आप सीडी को ब्रेक कर लीजिए किसमें, सीई और ईडी में, राइट. तो आप देखिए दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ पीसीडी इज पीसी सीडी पीडी. नो सीडी को हमने ब्रेक कर लिया सी और ईडी में, करेक्ट. तो आपको पता है सी इज इक्वल टू सी ए, राइट, एंड डी इज इक्वल टू डी बी. उसकी जगह रिप्लेस कर दिया हमने तो क्या हो गया, पी सी प्लस सी ए एंड पी डी प्लस बी डी, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी, एंड पी ए इज इक्वल टू पी वी जो आपको पता है विच इज 10. सो दैट मीन्स इट इज 20 सेंटीमीटर. दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, करेक्ट. अब इसको आगे बढ़ाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. If tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 by root 3 and a plus b is between 90 and 0, this is given. Okay, अब देखिए हम फिर पेन लेंगे. तो हमें क्या दिया, tan a plus b is equal to root 3. तो root 3 किसका tan होता है, tan a plus b is root 3 means a plus b is equal to 60 degree. और वो इस कंडीशन में मीट होना चाहिए. a plus b is between 0 and 90. So 60 is between 0 and 90. That means tan a plus b is equal to tan 60. That means a plus b is equal to 60 degree. Next is tan a minus b is equal to 1 by root 3. So tan a minus b is equal to 1 by root 3 means 1 by root 3 किसका tan होता है, 30 डिग्री का. That means a minus b is equal to 30. और फिर आपका जो है कंडीशन मीट हो गया कि वो बिटवीन 0 and 90 है. तो वो तो a प्लस बी के लिए था, बट a माइनस बी भी वही होगा कहीं आसपास. तो एडिंग 1 and 2 वी गेट 2a is equal to 90, दैट मीन्स a is equal to 45. एंड आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सेकंड को फर्स्ट से, तो आपको 2b मिल जाएगा, 2b is equal to 30. ये आप इसकी a की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, तभी आपको b की वैल्यू मिल जाएगी. सो 2b is equal to 30, दैट मीन्स b is equal to 15, राइट. आप ऐड करके देख लीजिए, 45 15 is 60 एंड 45 minus 15 is 30 डिग्री. या गलत दिया. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, राइट. अब आप इसको यहाँ नीचे किया हमने, 2 cos x स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10. अब इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है.
तो हमने क्या किया, कॉजेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2, बिकॉज साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, आपको पता होगा। तो कॉजेक 30 क्या हो गया 2, 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस एक्स, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, राइट। तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, tan 30 इज 1/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब आप इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 4 इज 8, x 3/4 as it is, minus 3/4 into 1/3 is minus 1/4 is equal to 10. What we arrive at is 32 plus 3x minus 1 is equal to 40. So 3x is equal to 9, x is equal to 3. Very simple question. And then ये आपको 2 marks मिल गए। ओके, ये हमने यहाँ नहीं किया है, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो नीचे किया है। ओके, vertices A, B and C of triangle ABC centers arcs are drawn. तो आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन था कि हाँ, कि एक ट्राइंगल ABC से हमने क्या किया, हमने सर्कल्स ड्रॉ किए। ओके, तो लेट्स से ट्राइंगल ABC हेयर, अब बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। ABC से हमने 3 सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर दिए और उसको चॉप ऑफ कर दिया, राइट। तो वो क्या एरिया होगा, सर्कल्स की रेडियस आपको दी हुई है। अब आपको पता है फुल सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, राइट। मान लीजिए थीटा एंगल का हमने एक सेक्शन चॉप किया, तो उसका एरिया क्या होगा, तो दैट विल बी πr² ओवर 360 इंटू थीटा, राइट। वही हमने यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो जब हम ए एंगल की बात करते हैं तो हो जाएगा एंगल A/360 πr², एंगल B/360 πr², एंगल C/360 πr²। तो πr² ओवर 360 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिला, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो ये हो गया 180/360 इंटू πr², 180/360 इज 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 का होल स्क्वायर, दैट इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एरिया विच इज चॉप्ड ऑफ और विच इज टेकन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया द अनशेडेड रीजन, ये हम यही कर देते हैं आगे, यहाँ जगह नहीं है। ओके रुकिए 1 मिनट, इसके लिए जगह बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन है इसकी, ये आप देखिए, ये आप अगर यहाँ इसमें देखें तो यहाँ पर आप देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, राइट, और ये 3 सेंटीमीटर है, और ये जो है 4 सेमी सर्कल्स, ये 4 सेमी सर्कल्स है, और अंदर आपको क्या मिलेगा स्क्वायर। ओके, क्योंकि स्क्वायर के दोनों साइड से सेमी सर्कल का आप मैक्सिमम एक रेडियस कट करेंगे, करेक्ट। यहाँ भी रेडियस कट करेंगे, तो मान लीजिए रेडियस है r, राइट। तो ये हो गया r, और ये हो गया r, और ये हो गया r, और ये हो गया r। ओके, नाउ थिंक ऑफ इट, अगर ये स्क्वायर है अंदर और जिसकी आर्म मान लीजिए a है, तो a इज इक्वल टू 2r, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 2r, यहाँ से मिल गया। तो आप देखिए 14 सेंटीमीटर लेंथ में क्या क्या कंपोनेंट आ गया, एक आपका 3 सेंटीमीटर आ गया, एक आगे 3 सेंटीमीटर आ गया, प्लस a आ गया, प्लस 2r आ गया ना, एंड a इज इक्वल टू 2r। तो ये हो गया 14 माइनस 6 इज 8, 6 को इधर ले आए, दैट इज इक्वल टू 2r प्लस 2r, दैट इज 4r। तो r क्या हो गया, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, राइट। r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अभी आपको क्या पता करना है, शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया निकालेंगे। तो बिगर स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर एरिया इक्वल टू आर्म स्क्वायर, आर्म क्या है 14, दैट इज इक्वल टू 196, राइट।
196 centimeter square. I'll use eraser. So this is 14 square, that is equal to 196 centimeter square. करेक्ट. अब हम शेडेड रीजन के एरिया की बात करते हैं. शेडेड रीजन में हमारे पास क्या है? देयर आर 4 सेमी सर्कल्स. तो 4 सेमी सर्कल्स जो हैं उनका एरिया क्या हुआ? 4 इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर 2, राइट, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. और जो अंदर स्क्वायर मिला है उसका एरिया क्या हुआ? स्क्वायर इनर, that is a square, which is 2r whole square, right, that is 4r square. So total area क्या हो गया जो आपका shaded नहीं है? that is 2 pi r square plus 2r square plus 4r square, right, that is अगर हम 2 pi r square या प्लस 4r स्क्वायर, राइट, तब हम r स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, 2r स्क्वायर, तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलता है? दैट इज पाई प्लस 4, और हमें r की वैल्यू पता है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, तो दिस बिकम्स 2 इंटू 2 इज 8 पाई प्लस 4. तो आप शेडेड रीजन का एरिया निकाल लो, ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, राइट. जो भी वैल्यू आए 196 माइनस this is 8 pi minus 32. So okay, don't go by the numbers, you can check the numbers again. I sort of make some mistakes with numbers, but this is the concept. Okay, yeah. The next question, yeah. Next question is National Art Convention. National Art Convention got registrations from students from all parts of the country, which are 60 are interested in change the pen. National Art Convention got registration from students from all parts of the country, and 60 are interested in music, 84 are interested in dance, and 108 students are interested in handicrafts. For optimum cultural exchange, organizers wish to keep them in minimum number of groups, such that each group consists of students interested in the same art form. Okay, so each art form should be an individual group and number of groups should be whole number, and the number of students in each group is the same. That means what? आपको यहाँ पर highest common factor निकालना है तीनों ग्रुप्स का. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? सो दैट आप देखिए 60, 84, 108 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 12. 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, 12 9 जा 108, right? Now obviously you cannot break people away, no? So each group will have at least same unit, okay, and each group will have same number of students, right? These are the constraints given. So say 12 is the number of students in each group. तब आप लगा लीजिए नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे म्यूजिक में, 5 7 एंड 9. तो अगर हर रूम में आप सेम ग्रुप के लोग रखना चाहते हैं तो आपको 21 रूम्स लगेंगे, राइट. नेक्स्ट वन इज okay, I have to close it again. First time I'm using Microsoft's whiteboard. Okay, I'm facing some challenges, so please bear with me, yeah. This is okay, right. Now next is, if alpha beta is 0 of quadratic polynomial 5x square plus 5x plus 1, find the value of this. So आपको पता है कि अगर एक इक्वेशन हो ax स्क्वायर bx plus c, okay,
I'll try to minimize the table. Okay. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसके रूट्स क्या होते हैं? उसके अल्फा बीटा अगर रूट्स हो तो अल्फा बीटा क्या कॉम्बिनेशन होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। करेक्ट। सो अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू आ गई 5 और सी की वैल्यू आ गई 1। इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा इज बी माइनस ए, राइट? दैट इज माइनस बी ओवर ए, दैट इज माइनस 5/5, दैट इज माइनस 1। करेक्ट। और अल्फा बीटा क्या हो गया? अल्फा बीटा इज 1 ओवर 5। करेक्ट। सो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 ओवर 5 और 1/5। तो 1 माइनस 2/5 क्या होता है? दैट इज 3/5, राइट। दूसरा है आपका 1 बाई अल्फा, अल्फा माइनस 1 इज 1 बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 इज 1 बाई बीटा। दैट इज इक्वल टू क्या लोगे आप? एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, राइट? अल्फा बीटा लेंगे ना, हाँ छोटा कर लो। तो आपको ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, ओ नो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा द एलसीएम। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है दैट इज 1 और अल्फा बीटा क्या है? 1/5। तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 5। तो आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज sum of a 2-digit number. I will do this and question is the sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is this. Okay. So question is कि if the sum of 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? या इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करते हैं xy प्रिज्यूम करके। हाँ ओके। I'll take the pen. I think I took the highlighter, so I'll take the pen. हाँ तो हमने मान लीजिए नंबर प्रिज्यूम किया एक्स वाई, यहाँ इतनी जगह नहीं है, लीव द हाईलाइटर। तो उसका रिवर्स क्या होगा? वाई एक्स। तो एक्स वाई अगर नंबर है, मान लीजिए 43 नंबर है, तो 43 कैसे आता है? दैट इज 4 इंटू 10 प्लस 3। इसी तरह अगर एक्स वाई नंबर है, इसमें डेसिमल प्लेस पर एक्स है और यूनिट प्लेस पर वाई है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 10x प्लस वाई। इज दैट करेक्ट? और हमने जब रिवर्स किया तो हो गया वाई एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? दैट इज माइनस 10y प्लस एक्स। ये वैल्यू हुई ना, एंड दैट इज ओके सम। ओके सो विल डू सम, विल नॉट सब्ट्रैक्ट इट, इज इक्वल टू 66। ये एक इक्वेशन बन गई। एंड डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। तो मान लीजिए डिजिट्स ऑफ द नंबर आर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाता है 11। आपको नंबर फाइंड करना है, करेक्ट? दैट इज द ओरिजिनल क्वेश्चन। तो ये हो गया 11x प्लस 11y इक्वल टू 66।
तो हम 11 से दोनों साइड्स आप डिवाइड कर लीजिए, तो आपको क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और यहाँ आपके पास क्या इक्वेशन थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो आप उसको अगर सिंपली भी ऐड कर देंगे, राइट, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2x मिल जाएगा। 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। और x 4 है तो y क्या होगा, y ऑब्वियसली 2 होगा। वो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या आप उसको दूसरा ऑपरेशन करके सबट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं 2 को फर्स्ट। हाँ, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू, तो नंबर्स आर 42 एंड दूसरा नंबर हुआ 24। आप ऐड करके देखिए, दिस इज 66, इसका डिवीजन इज 4 माइनस 2 इज 2। सो ये आपका क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, वी हैव टू गो अप and check it. Next question is, if 2 by root x plus 3 by root y is equal to 2 and 4 by root x minus 9 by root y is equal to minus 1, x y is greater than 0, that is what you have to solve. Okay, तो अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो हम रूट में करें जो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा 10th लेवल पे, तो हम इसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। अब ये क्वेश्चंस मुझे जो है यही सॉल्व करता हूँ साइड में। ओके, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि रूट एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे दैट रूट एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रूट एक्स अगर ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो रूट एक्स हो गया ए, और वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो रूट वाई हो गया बी। ओके, सो अब हम उसको रिप्लेस कर देंगे और 1 बाई रूट एक्स एज्यूम कर लीजिए बेस्ट। ओके, 1 बाई रूट वाई है बी। तो अब ये हो गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी क्या बनी, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। अब हमने क्या करना है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकेम 4a प्लस 6b is equal to, initially it was 2, so 2 into 2 is 4, or I will add it to equation number 2. So what I get is, or I'll subtract the second equation from first equation, so I get 6b minus minus 9b, that is 15b is equal to 4 minus minus 1, that is 5. Okay, that means b is equal to 1 by 3. Similarly, I'll achieve a. So I'll put b is equal to 1 by 3, so I get 4a minus 9 into 1 by 3 is minus 3 is equal to minus 1. So 4a is equal to 3 minus 1 is equal to 2. So a is equal to 1 by 2. तो a मुझे मिल गया और b मुझे मिल गया। अभी आप यहाँ जाकर रिप्लेस कर दीजिए, 1 by root x is equal to a. So that means root x is equal to 1 by a. करेक्ट, और a की वैल्यू आई थी 1 by 2, तो 1 by a 1 by 1 by 2 is 2. So x is equal to 4 और y is equal to, similarly we will obtain y, root y is equal to 1 by b and b is 1 by 3, so y is equal to 9. अब आप उसको यहाँ कहीं लगा के देख लीजिए, 2 by root x is 2 by 2 is 1 and 3 by root 9 is 1, so 1 plus 1 is 2. 4 by root x is 4 by 2 2 minus 9 by root y is 9 by 3 is 3, so 2 minus 3 is minus 1, so my answers are correct, whosoever says whatsoever. Okay, so now we have next question, question number 29, and 29 says that a P and PB are tangents drawn to a circle of center O. तो ये आपका सेंटर हो गया सर्कल का, और P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए PA and PB. Chord AB makes an angle of 30 degree with the radius. That means ये एंगल हो गया 30 डिग्री,
अब ये एंगल अगर 30 डिग्री है, आई ट्राई टू यूज सम अदर कलर. ओके, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है. सो see which color I should use. Okay, I use this color. So if this angle is 30 डिग्री, that means ये जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट हमेशा कितने एंगल पर होता है? 90 डिग्री एंगल पर होता है फ्रॉम सेंटर. सो दैट मीन्स ये जो लेफ्ट आउट एंगल है ये कितना हो गया? 90 minus 30, that is 60 डिग्री. If this is 60 degree, now you know that OA is equal to OB. Both are radii. So even this will be 30 degree. Right? If this is 30 degree, then this angle is again 90, OPB. If this total angle is 90, this becomes 60. That means in triangle APB, triangle APB, both the angles are 60. It is PAB is equal to PBA is equal to 60. Angle PBA is equal to 60. If two angles of triangle are 60, the third angle has to be 60 because the total sum has to be 180. That means angle APB is equal to also 60 degrees. So all three angles are 60 degrees. That means triangle APB is a equilateral triangle. Right? Is equilateral triangle. Equilateral triangle's property is that all the three arms are equal. That means AP is equal to PB is equal to AB. और AB की लेंथ आपको दी हुई, correct, which is 6 centimeters. What is the length? 6 centimeters. So the answer is 6 centimeters. Right? Now we'll take next question. Next question is prove that two tangents PA, TP and TQ are drawn to a circle with center O from a point T. तो ये आपका सर्कल हो गया और from a point T I have drawn two tangents. Sorry. T, I have drawn TP and TQ. Correct. O is the center of the circle. Right? So TP and TQ. O is the center of the circle. So they are saying prove that angle PTQ. So they have connected this chord. They are saying this angle is equal to 2 angle OPQ. O angle PTQ, this angle. So presuming this angle is theta. Yeah? Is equal to 2 angle OPQ. OPQ is equal to twice of this angle. Correct? Okay. Presuming this is x. Okay. So let's say this is x. So this is 90 minus x. Is that correct or not? If this is x, OP is equal to OQ, the same logic which we have given in the previous one. So this is also x. So this is also 90 minus x. So in triangle TPQ, what are the three angles? Angle QTP, right? Plus the other angles, that is QP, angle QPT, QTP and PQT, right? These are the three angles. The other two angles are 90 minus theta, 90 minus x, right, into 2. That means angle QTP plus 180 minus 2x is equal to angle TPQ. Right? Angle TPQ in triangle TPQ. Okay. In triangle TPQ, all three angles will be equal to 180. Right? I don't know what is happening to pen today.
when this is acting funny. Right. So that means angle QTP is angle QTP means this angle is equal to 180 minus 90 into 2 is 180. 2 tha, this was 180. That is 180 minus 180 and minus x minus 2x when this goes to this side becomes 2x. So 180 minus 180. And what is x? X is 2 into angle. What is x? X is angle QA, this angle OPQ. That is what we want to prove. So this is proved. Right? I will move on to next one. Is equal to 3 sin theta cos theta. Okay? What is happening here? There's theta. Okay. So what we'll do is we'll divide the whole thing by cos square theta both the sides. So what we get? We'll divide this by cos square theta. We'll divide this by cos square theta. We can do that, right? So what do we get here? This cos theta gets adjusted, square becomes single. Yeah? And what we get is? We get is this. And 1 by cos square theta is? 1 by cos square theta is? 1 by cos square is sec square theta. And sin square theta by cos square theta is tan square theta. And 3 sin theta by cos theta is 3 tan theta. Correct? Now what is sec square theta? Sec square theta is tan square theta plus 1. Okay? Plus 1. And there was another tan square theta becomes 2 tan square theta plus 1 minus 3 tan theta. अब क्या बन गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. 3 tan थीटा को इधर ले आए तो इधर 0 रह गया. राइट? तो किस टाइप की इक्वेशन बन गई? 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0. So that means x is equal to, we'll use quadratic formula. What was the quadratic formula? That is minus b, which is whatever that b factor is. Compare this with ax square plus bx plus c is equal to 0. So you have value of a, b and c. Value of b is minus 3, so this becomes plus 3 plus minus root of b square, that is 9, minus 4 into 2, 8 into 1, that is 8, over 2 into a. यहाँ पर a is 2 only. जैसे compare किया है देखिए x square bx plus c, so that is 2. So it becomes 3 plus minus, what is 9 minus 8? That is 1. 1 का whole square root is 1 only. So that is, 1. I'll use the eraser. So 3 plus minus 1 over 2. So 3 plus 1 क्या होता है? 3 plus 1 होता है 4. 3 minus 1 क्या होता है? 3 minus 1 होता है 2. तो क्या आंसर हो गया? tan theta is equal to 4 by 2 और 3 minus 1 2 by 2. That is equal to what? 2 or 1. I think that was the question. And then any mistake in terms of arithmetic, 1 or 1 by 2 आना चाहिए. I think 1 आएगा. This is 3 plus minus 9 minus 8. 3 9 minus 8 is 1. 3 minus 1 2 by 2. 3 plus 1 4 by 2. Some mistake I have done somewhere. Let me check. That is sec square theta plus tan square theta. Okay, that is 1 plus 2 tan square theta minus 3 tan theta is equal to 0. So that means tan theta is equal to 3 plus minus 9 minus 8 by 2. 2 into 2. Okay.
That's where I'm making mistake. You should have warned me, no? Even teachers make mistakes, okay? That here this will become 2 into A is 2, which I forgot to put. So 2 into 2. So this becomes 2 into 2. Right? So 4 by 4 and 2 by 4. So what is 2 by 4? That is 1 by 2. What is 4 by 4? That is 1. You see? You got time to smile at me, I made a mistake. Good. But I corrected it also, right? Because this was a proving case. Huh? Thank you. And the next one is a stats question. What I'm going to do is I'm going to paste the solution here. Okay. That's a standard question. Even you know how to do it. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to nearest millimeter, and data obtained is represented in the following table. So number of leaves, you have length of the class. So you'll take a class middle point, you'll take a mean class, and then you'll apply the formula. So right here next is I'm going to paste the solution. Okay, so that should give you an idea now this question is to be done, and then we'll focus on the next section. Okay, now here we go, and this is your, I think this is the solution. Okay, here we go. This is the solution to this question. This is how we'll do this question. So you have length in mm, and you have got number of leaves 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. We'll take a mean class, okay, and then we'll take a class interval from 0.5 before to 0.5 later, and we'll take a mid-x, and we'll take the deviation from the mean class, which is 149. So 149, 145 was the mean class, its midpoint was 149. So from that we have taken a deviation of 122, that is minus 27, 131 minus 149 is minus 18, 140 minus 149 is minus 9. Similarly for the plus ones, 158 minus 149, 167 minus 149, and so on. And we have taken FD, that is frequency into deviation, and then we have summed it up. So sigma FD हो गया. Formula is mean is equal to assumed mean class, assume mean plus sigma FD by sigma F, that is 149 plus minus 8 by 40. So it becomes minus, it becomes 149 minus 2.025. Answer is 146.975. Okay, so that's about it. We'll move on to section D. Thank you. Please keep on watching. Hi. So yeah. So we have this question: a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. So as you would have read in your chapter, upstream and downstream problems are there in CBSE textbook, and the concept we use is upstream, it goes against the stream. So velocity of boat minus velocity of stream is the velocity of traveling. While in case of downstream, the water or the stream velocity है वो सपोर्ट करती है बोट को, तो हम दोनों का प्लस लेते हैं वी प्लस वी एस. ओके, तो डाउन स्ट्रीम जाना ज़्यादा आसान होता है, अप स्ट्रीम जाना मुश्किल होता है. मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके, सो इफ़ यू सी वी बी प्लस वी एस लगेगा अप स्ट्रीम, वी बी माइनस वी एस लगेगा अप स्ट्रीम में, वी बी प्लस वी एस लगेगा डाउन स्ट्रीम में. डिस्टेंस इज सेम और वो दी हुई है आपको 24 किलोमीटर. सो ये हमने सोल्यूशन इसका बनाया कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर. द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इज 18 माइनस एक्स. 18 किलोमीटर पर आवर जो है बोट की स्पीड दी हुई है, और स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम हो गया 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर. तो आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट. So time taken to go upstream will be 24 over 18 minus x. और time taken to go downstream will be 24 by 18 plus x. अब अपस्ट्रीम जाने में इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 24 by 18 minus x जो है वो बड़ा है 24 by 18 plus x है. तो सब्ट्रैक्शन करेंगे 24 by 18 minus x minus 24 by 18 plus x दैट इज इक्वल टू 1. और यहाँ सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है तो 1 आवर चलेगा. अगर यही स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दी होती तो आपको उसे
1 आवर की जगह 3600 सेकेंड्स लिखना पड़ता है। मिनट में दी होती तो मिनट लिखना पड़ता, बट यहाँ सब कुछ आवर में है और किलोमीटर में है तो इट्स ओके। यूनिट सब तरफ सेम होनी चाहिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी आप देखें 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स कुछ कॉमन तो है नहीं, तो एलसीएम जो होगा दैट विल बी 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। तो फिर 18 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे 18 प्लस एक्स, राइट। तो इक्वेशन बनेगी 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। और इधर नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की जगह 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स आ जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और आप खुद भी करके देखिए उसे पेपर पे तो आपको समझ में आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है 324 जो है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लीजिए या फैक्टराइज कर लीजिए। तो आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -324 हो और उनका समेशन 48 हो। तो 54 एंड 6 जो हैं ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका प्ले अराउंड जो 48 आता है। 54 माइनस 6 इज 48 और 54 इंटू 6 इज 324। तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 54। अब माइनस तो हो नहीं सकती स्ट्रीम की स्पीड से, x इज इक्वल टू 6 इज द ओनली वाइबल सोल्यूशन। ओके, so x is equal to 6 as the speed of the stream, which looks okay because आपका बोर्ड का स्पीड 18 है, राइट। तो अब दूसरा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शनल था कि दो पाइप्स हैं, स्मॉलर पाइप्स एंड बिगर पाइप्स। सो लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इज एक्स आर, टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप इज एक्स माइनस 10 आवर्स। और ये क्वेश्चन पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पर पड़ा है, आप उतार लीजिए और इसकी आंसर की भी पड़ी हुई है। और ये जो वीडियो है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए है जो राइट सोल्यूशन है, राइट। बट ये पीडीएफ आप सीबीएसई की वेबसाइट से उतार सकते हैं, आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं भेज दूंगा। तो अब देखिए पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर विल बी 1 बाई एक्स, बिकॉज स्मॉलर पाइप टोटल टैंक को भरने में एक्स आवर्स लेता है तो 1 आवर में 1 बाई एक्स भरेगा। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर इज 1 बाई एक्स माइनस 10, राइट। क्वेश्चन था वाटर पाइप टैप जो है जो मिलकर अगर दोनों एक साथ चालू करें तो 9 एंड 3/8 आवर्स में दे फिल द टैंक। दैट मीन्स पूरा टैंक 755/8 आवर्स में भर जाता है। तो 1 आवर में 8/75 आवर्स भरेगा। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75, राइट। यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको। ओके, और ये आपको लीनियर इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, राइट। अब आपको ये सॉल्व करनी है। तो अब आप देखिए क्या x माइनस 10 होगा, जो दोनों हैं अलग अलग हैं डिनोमिनेटर में, तो वो एलसीएम हो गया। और एलसीएम अगर x माइनस 10 है तो पहले का डिनोमिनेटर x माइनस 10 है तो x आ गया फैक्टर, तो x से x इंटू 1 इज x प्लस ऐसे x माइनस 10 आ गया बाजू में, दैट इज इक्वल टू 8/75। तो हो गया 2x माइनस 10 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 10 इज 8/75, करेक्ट। बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम जैसा ही है, वोट वाली प्रॉब्लम जैसा। तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू, अब उसको 75 से मल्टीप्लाई करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। 75 इंटू 2 इज 150x माइनस 10 इंटू 75 750 इज इक्वल टू 8x इंटू एक्स माइनस 10 विच इज 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब दोनों साइड हैं x के कंपोनेंट तो दे विल प्ले अराउंड। तो अब एक साइड ले जाएंगे सबको, तो 8x स्क्वायर माइनस 230x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। साइन चेंज हो जाता है जब आप आरएचएस से एलएचएस में ले जाते हैं किसी भी अलजेब्रिक कंपोनेंट को। अब आप देखिए प्लस हुआ 750 बिकॉज माइनस का प्लस हो गया। अब आप देखिए इसका क्या कर सकते हैं, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ऑल आई नो इज क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा है आप फैक्टर बनाइए। अब फैक्टर बनाने के लिए 8 और 750 इज टू लार्ज, कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन को। 2 बहुत ही कॉमन फैक्टर है तीनों में, तो वो हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 750। ये इतना सिंपल क्वाड्रेटिक लग नहीं रहा है, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, इसके फैक्टर बनते नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके,
तो इस तरह के सिनारियोज में क्या करते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से फैक्टर्स निकाल लेते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा देते हैं सीधे। तो आपको x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, राइट। तो दो जो फैक्टर आ रहे हैं इसमें कैलकुलेशन करने के बाद, वो इतने सिंपल लग नहीं रहे। क्या हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं। यूजुअली फैक्टर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके आपको दिख जाता है कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी। अल्फ़ा बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक की रूट है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होती है उसकी फॉर्म, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इज सी बाई ए। ये तो आपने पढ़ा होगा अपनी टेक्स्ट बुक में, राइट। नहीं पढ़ा है तो अभी बहुत टाइम है, आप लोग रिवाइज कर लो, अभी 2 महीने बचे हैं, करेक्ट। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, लेट मी थिंक ऑफ द सॉल्यूशंस। Okay, so from this quadratic formula we get two values of x. One is your 25 and the other is 30/8. Now 30/8 is 3.75. Yeah? Now 3.75 is not possible, reason being that larger pipe takes x minus 10 hours. Okay, so the only possible solution is x is equal to 25. Okay, now we'll move on to next question. And that says, state and prove proportionality theorem. In the given figure, angle CEF is equal to angle CFE. Angle CEF is equal to angle CF is equal to CFE. These two angles are equal. CEF is equal to CFE. So these two angles are equal. Yeah. F is the midpoint of DC. That means this is equal to this. Prove that AB over BD is equal to AE over FD. So we'll go on to this and see. Now if we see, we have to prove. Now what we'll do is, from D we'll draw a line DG which is parallel to B. Okay, so DG is parallel to B. In triangle AB, ABE. Okay, AB by BD. Now you see that DG is parallel to these two lines are parallel. Okay, so so we are talking of triangle ABE. This and this, these two. Okay, so AB over BD is equal to AE over GE, correct, and CF is equal to FD. F is the midpoint of DC. In triangle CDG, now see, look at the triangle CDG. Triangle CDG, what is happening is, in triangle CDG and triangle CFE. Now if you see, F is the midpoint, okay, of DC, and you will apply midpoint theorem. Okay, so and FE is parallel to DG. This because we have drawn this parallel line. So in triangle CDG and triangle CDG and triangle CFE, now we are comparing these two. Okay, if you see, FE is parallel to DG, right, and F is the middle point, right. So that means FE over DF over CF. DF over CF will be equal to GE over CE. Will be equal to GE over CE. Okay, is equal to 1. Now G is equal to CE. That means G is equal to CE because EF is equal. EF is E is the middle point. F is the parallel thing. So that means EF is half of
DG, right? So these are two other similar triangle pairs. Angle CEF is equal to CFE, this was given. So CF is equal to CF is equal to CE, right? So we have proved the similarity in this triangle, okay? And from here we get CF is equal to G. CF is equal to G, correct? CF is equal to CE. Yeah, sides opposite to equal angle. From 2 and 3 we get CF is equal to G. CF is equal to G. Why? Because CF is equal to CF is equal to DF, right? And then this becomes the middle point, right? So G is equal to FD. So if you see AB over BD is equal to AE over GE, tends to AV over BD is equal to AE over FD. Correct? Is it clear or not? Yeah? Now we'll move on to next question. Okay, now question number 34. Water is flowing at the rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 cm into cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of water in pond rise by 21 centimeter? Now what you have to do is, you have water coming out of a cylinder of which you have the diameter and then you need height. So height of the water column, or in this case, in this case is actually the length of the water column which will pass through in 1 hour will be 15 kilometer. So think of a cylinder which has radius of 7 centimeters and which has height of 15,000 meters, because that is the amount of water that will fall through the pipe, and this has to fill a cuboid. Cuboid has got length and width and height. Okay, rise by 21 centimeters. So all of this is given. All you gotta do is match the area, match the volume. So length of the pond is 1, length is equal to 50 meter, width of the pond is 44 meter. Correct. Water level is to rise by h is equal to 21 by 100 meter. Okay, all of this is given. So volume of the water in the pond is LBH, right? It's a cuboid. 50 into 44 into 21 by 100 is 462 meter cube. The diameter of the pipe is given 14 centimeters. Radius of the pipe will be 7 by 100. So what is the volume of a cylinder? Now just think of it. This is a cylinder of which radius is R, yeah, and height is h. Yeah? So the cylinder's volume will be pi r square h, right? Pi r square h. I don't know what is happening to this pen. Okay, I'll write again. Huh? So pi r square h has to equal to the volume of the cuboid, which is which is equal to 22 by 7 into 7 by 100 to 7 by 100 is equal to 154 by 10,000 meter square. This is the area. Okay, rate at which water is flowing through the pipe is 15,000 meter per hour. So how much water, what is the volume of the water that will flow through in 1 hour? So we'll multiply with 15,000, the cross sectional area into height. And here is the cuboid's volume. So how much time will it take? It will take 2 hours. Now they are saying what is the speed of the water if the rise in water level is to be attained in 1 hour. So obviously if the same work has to be done in 1 hour, obviously the speed of water or the height of the water column should be double in 1 hour. That means it should be 30 km per hour, because previously it was taking 2 hours. Hi, so moving on to question number 35, we have median of the following data is 50. Okay, and what they are saying is find the value of P and Q if the sum of all frequencies is 90. The sum of all frequencies is 90. Here we have solved this question. So for various classes we have put number of students. So what you see is cumulative frequency is P plus Q plus 78. You have P plus 15, 40, this way it will go on, which is equal to 90. So that means P plus Q plus 78 is equal to 90. That means P plus Q is equal to 12. So you have two variables here and
You have one equation. You need one more equation. So what is given here is you have been given the median. Okay. So median is 50 and median formula is L into L plus n by 2 minus C over F into H. So I've used that formula and put the values there, and that's how we arrive at P is equal to 5 from this equation. And if P is equal to 5, then P plus Q is equal to 12, so Q is equal to 7. Now back to mode. Mode we'll use the formula mode L is equal to L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2. Okay. So what is L? L is one which has maximum frequency. So which is the modal class here in this data? So the modal class here is 40 to 50. So L will be lower limit of this class, which is 40. Let me try to solve it. 40 plus F1 is the frequency of the class, which is 25, minus F0 is frequency of the class before the modal class, which is 15 over 2 into 25 minus F0 is 15 minus F2 is the class after the modal class, which is 20. So that is how we'll do it. So this works out to 40 plus 25 minus 15 is 10 over 50 minus 15 is 35, or 50 minus 35 is 15. Okay, so 5 2s are 10, 5 3s are 15. So 2 over 3 6.67. So the answer is 40.67. So that is the mode, right? Hi, so now we will look at question number 36. Which says Manpreet Kaur is the national record holder. Now there's a whole story, so read through it. Actually, yeah. In the shot put discipline, her throw of 18.86 meters at the Asian Grand Prix in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Sanjita is determined. So our actor here is Sanjita. Determined to earn gold in Olympics one day. Initially, her throw reached 7.56 meters. Only being an athlete in school, she regularly practiced both in the mornings and in the evening. Was able to improve the distance by 9 centimeters every week. Now this thing has actually come in second part of the question, so ignore it. Your first part of question is here in the last 3 lines. During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day increasing the number of throws by 12. So this is your D, deviation, and this is your A, 40 throws. So your first question is, how many throws Sanjita practiced on 11th day of the camp? So you have number of throws during camp. A is equal to 40, D is equal to 12. If you see step 1. And 11th day will be 11 terms. So T11 is A plus 10D. That is 40 plus 10 into 12. That is 160 throws. Okay. And then you have second part of the question. What would be Sanjita's throw distance at the end of 6 weeks? Now if you see, she started with the throw distance of 7.56 meter only. So the next AP begins when the first term is 7.56 meter. Deviation is 9 centimeter, which is 0.09 meter. You have to convert everything into 1 unit, and the term is 6 weeks. Okay, and yeah. So what is central at the end of 6 weeks? So your sixth or nth term will be A plus n minus 1d, which is 7.56 plus she improves only 9 centimeter every week, which is 0.09 meters into 6. At the end of 6 weeks will means 6 term completed. Okay, into 0.09. So 7.56 plus 0.54. So that is the answer. Now second question is, when will she able to achieve throw of 11.16 meter? So that is the desired term. Okay. So Tn is given, which is 11.16 meter, and you have A and you have D. So you have to find n here. So we'll put the same formula, A plus n minus 1d is equal to Tn, that is 11.16 is equal to 7.56 plus n minus 1 into 0.09. So here we achieve it, n minus 1 is equal to 40, so n is 41. So Sanjita will be able to throw 11.16 meters in 41 weeks. Okay, now the question number 3. Question number 3 is third part. How many throws did she do during the entire camp of 15 days? Now this is summation game. Okay, so you have
N is equal to 15, D is equal to 12, A is equal to 40. The first part, the first AP which you used. And Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1D. And using this formula, we arrived at the total number of throws shaded, which is 1860 throws. So this is a new trend, so you have case studies and you have to answer case studies. And obviously, all of them are from your syllabus. Okay, so you got to understand from which chapter or from which part, they are trying to refer to. Question number 37. Tharunaya was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August, and for the first time in the FIFA Women's World Cup's history, 2 nations host in 10 venues. All of these are stories, you don't have to get confused. You just keep reading through it, so the content will come later. Her father felt that the game can be better understood if the position of players is represented as points. So this is a coordinate geometry problem. You have these points given A, B, C, D. Okay, and you have various positions defined, not in terms of point, but in terms of name, center back, full back, goalkeeper, sweeper, which you have marked there, which are given in as part of the question. So at an instance, the midfielders and forward formed a parallelogram. So you see these are the midfielders and forward make a parallelogram. Find the position of the central midfielder, the position of other players who formed a parallelogram of A, B and C. So then what is missing? What is missing is D. A, B and C are given and D is missing, right? Now if you see, let D be A, comma B, which is x coordinate is A and y coordinate is B. So let D be AB. Okay, so if you see, midpoint of AC will be midpoint of BD, correct? Both the midpoints meet at the same point, right? Because it's a parallelogram. So we have coordinates of A, B, C and D is missing, and D we have presumed to be A and B, right? So that is how we arrived at A and B. Okay. Now the next part. Next part is, so you had A, B, C given, only D was to be found out in the parallelogram A, B, C, D. Now parallelogram के diagonals एक ही जगह मिलते हैं, right? तो हमने वो property use करके D के coordinates निकाल लिए A and B. Now next question था, check if the goalkeeper G, sweeper H and wingback K. तो कहाँ G, H and K, they are in the सेम लाइन. तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, तो सेम लाइन में कैसे निकालेंगे? आप जी एच, एच के और जी के डिस्टेंस निकाल लीजिए. इफ अगर जी एच प्लस एच के इज इक्वल टू जी के, दैट मीन्स दे इन द सेम लाइन. तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, राइट? तो जी एच आया 2√13, जी के आया √13, एच के आया √13. तो आप देखिए जी के प्लस एच के इज इक्वल टू जी एच, दैट मीन्स जी एच एंड के आर इन द सेम लाइन. दूसरा तरीका है स्लोप निकालने का. अगर आप स्लोप निकाल लें y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जी एच, एच के और जी के का स्लोप सेम है, दैट मीन्स यार, बट प्रॉब्लम इज स्लोप इज कि दे में भी पैरेलल लाइंस. ओके, सो अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उनका स्लोप भी सेम होता है. दैट डज नॉट मीन दे आर the same line. The other one is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है, फिर आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, वो ज़्यादा टफ है. तो उससे अच्छा है आप ये डिस्टेंसेस निकाल के कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट इज और में देखिए, चेक इफ द फुल बैक 5-3 and center back -4-6 equidistant from forward and if C is the midpoint of H. Now if you see, if goalkeeper G, H and wingback K fall on the same line, okay, so here we have done fallback J and center back I are equidistant from midpoint of IJ, that is क्या किया यहाँ पे, CI CJ का हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लिया, और फुल बैक और सेंटर बैक J और I अगर इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम 0-1, तो वो हमने निकाल लिया कैसे, मिड पॉइंट निकाल के. इक्विडिस्टेंस मतलब वो मिडिल पॉइंट होगा उसका, राइट? तो मिड पॉइंट ऑफ IJ इज 1/2 3/2 विच इज नॉट C. ओके, सो 0-1 से वो इक्वल डिस्टेंस नहीं है, सो C इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ IJ. Next, if defensive midfielder 1-4 attacking midfielder B 2-3 and striker AB lie on the same straight line and B is equidistant from A and D.
तो अब इसका कैसे करेंगे, बी ए बी और ई जो है सेम स्ट्रेट लाइन पर होंगे और बी अगर इक्वल डिस्टेंस है ए और ई से तो बी मिड पॉइंट होना चाहिए ई का, करेक्ट। अगर एक लाइन पर ये आपका एक पॉइंट है, अगर इक्वल डिस्टेंट है मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो वो फंडा लगाया था हमने, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया y1 प्लस y2/2 x1 प्लस x2/2 और हमारा पॉइंट आ गया 2-3, ओके। एंड वो हमें दिया हुआ था 2-3, तो यहाँ पर हमने जो a और b लगा कर निकाला उसको हमने इक्वेट कर दिया 2 और -3 से, यहाँ से आपको a और b की वैल्यू मिल गई, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। Hi, so we are on question number 38, which says there is another case study based question which says one evening Kaushik was in a park, children were playing cricket, birds were singing on a nearby tree. So actually the height of the tree is important, whether birds were singing or not doesn't matter. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degree. When a sixer was hit, now if you see they have given a diagram also. So that is the best part because they have given you the diagram, so you don't have to make a diagram for this. So when a sixer was hit, so this was the bird, okay, initially at a point. Okay, this is the bird, right? This was at 45-degree elevation. Height of the tree is given 80 meters. So that means CB is equal to CB you can find out, So 45, tan 45 is 1. So that is base is equal to perpendicular. So एक part तो आपकी solve हो गई. This is also 80 meters. Yeah? Now next is when a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. In 2 seconds, he observed the bird flying at the same height at an angle of 30 degree. Okay, and the ball flying towards him at the same height at an angle of elevation 60 degree. So after 2 seconds, ball is at F and the bird is at D and D is at 30 degree angle from C. This is where the observer is. Okay. So observer is observing, that's why all the angles are taken from observer side. And the ball is at 60 degree at point F and the bird initially was at A, now the bird is at D. So bird has moved from A to D while ball moved from C to F. Okay, and all the angles are given. That means you have got one tree height, so here you get CB. How they have done is we have solved it here. Tan 30 is equal to 80 over CE. Tan 30 is tan 30, that is 80, that is the height remains same because bird was flying at the same height, 80 over CE. तो यहाँ से आपको CE मिल गया क्योंकि tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, राइट, दैट इज इक्वल टू 80 बाई CE, तो आपको CE मिल गया यहाँ से। नाउ डिस्टेंस कितना उड़ा बर्ड ने, AD इज इक्वल टू AD आप देखें इस फिगर में AD इज इक्वल टू BE, तो BE क्या है, BE इज इक्वल टू CE माइनस CB और CB आपको पहले मिल गया AB से, राइट, AB से आपको CB मिल गया था which is 80 meters only, right, tan 45, right. Now so that is equal to 80√3 and tan, now distance the bird flew is AD is equal to 80√3 minus 80, this is 80 into in bracket √3 minus 1. Now we will take tan 60, tan 60 is 80 by CG. Here if you see tan 60 is 80 over 80, the height remains same in all the scenarios. GF is equal to BA is equal to ED. So this is 80 and tan 60 that is upon CG. Now if you see CG यहाँ से आपको मिल गया, tan 60 is √3 is equal to 80 over CG. So CG is 80 over √3. So distance the ball travelled after hitting the tree is FA. Distance the ball travelled after hitting the tree is equal to FA is equal to GB which is equal to CB minus CG. So हमारे पास CB है, CG है, सब हमने वैल्यूज लगा दिए, हम 80 minus 80 by √3, 80 in bracket 1 minus 1 by √3. Now last question is how far the bird fly, वो निकाल दिया. After hitting the tree, how far did the ball travel in the sky when Kaushik saw the ball? Good. What is the speed of the bird in meter per minute if it had flown 20 into √3 plus 1? अब आपको टाइम दिया हुआ था, ओरिजिनली 2 सेकेंड्स में ऑब्जर्वेशन था, तो स्पीड ऑफ द बर्ड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अभी न्यू डिस्टेंस आपको दे दिया 20 into √3 plus 1, टाइम था 2 सेकेंड्स, दैट इज मीटर पर सेकेंड. बट आपको स्पीड बतानी मीटर पर मिनट में, हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, into 60 meter per minute, that is 600 into √3 plus 1. Okay, very easy question, almost free 5 marks. The next one is one question we forgot to attend. It was question number 34. This I have added here.
The tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and radius of the cylindrical park are this, तो यहाँ आपको height दी हुई है, यहाँ आपको radius दी हुई है, यहाँ आपको total height भी दी हुई है of the tent which is 10.5. तो इसका मतलब height of the cone आपको यहाँ से मिल जाएगी, which will be 10.5 minus 3 which is 7.5. ये आपको मिल गई, राइट। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि सब आपको डायमेंशन दी हुई है, टोटल हाइट 10 दिया हुआ है, ओके। टोटल हाइट 13.5, तो 13.5 में से 3 निकाला तो हमें ऑलरेडी निकल गया 10.5 मीटर जो है ये हमारी कोन की हाइट है। तो कोन की हाइट आपको पता है, रेडियस आपको पता है, अब आप कोन का लेटेंट हाइट निकाल लेंगे ये वाली, ओके, बिकॉज कर्व सरफेस एरिया द कोन इज पाई आर एल। तो आपको एल यहाँ से मिल गया, राइट, और पाई आर एल फार्मूला लगाएंगे और आपको सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, वो लगा देंगे तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन निकाली, कर्व सरफेस से सिलेंड्रिकल पोर्शन 2 पाई आर एच निकाल दिया, ओके। और यहाँ पर आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकाल दिया पाई आर एल से, तो ये आपको दोनों वैल्यूज मिल गई, दोनों को ऐड किया तो आपको टेंट की टोटल कर्व सरफेस एरिया मिल गया, क्योंकि जब उस पर कैनवस चढ़ाएंगे तो कर्व सरफेस एरिया पर ही चढ़ाएंगे, ओके। उसके बाद प्रोविजन फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज 26 मीटर स्क्वायर, उसमें ऐड कर दिया तो आपको टोटल एरिया मिल गया, और उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पर स्क्वायर मीटर जो भी कॉस्ट है, आपको टोटल कॉस्ट मिल गई, वो भी आपको दी हुई थी 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो 500 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 5 लाख, 500 मीन्स 500, 500 into 1060 is 5,30,000. So that is the end of this. Please practice this question paper, and then they have given a mathematical question pool also of 50 pages, that also you practice, okay, and that is the way to go forward, and आपका CBSE में 90% प्लस आ जाएगा, ओके। मैं कोशिश करूंगा वो 50 पेजेस वाला भी मैं एक दूसरा वाइट बोर्ड यूज करके कुछ अच्छा सा और वो डाल दूँ यहाँ यूट्यूब पर। सो प्लीज़ कीप इन टच, सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको अलर्ट मिलते रहें, और जो हम नए क्वेश्चन पेपर्स डालेंगे वो भी आपको मिलते रहें। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।